Now the next topics that we'll cover is kind of a miscellaneous topic, you can say, related to prime ministers and chief ministers, because there are many smaller details that is very important to be known from the prelims perspective specifically. So that we'll try to cover here. And before we go on to those details, firstly we'll understand here about certain things about deputy PM and CM, for the reason that there has been mention about it in the book, and in case they ask you certain question, you might get into trouble. So therefore it's better that we finish it off as well. This is a very smaller segment. नाउ फर्स्टली अगर आप बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम लेट्स से फर्स्ट टॉक अबाउट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स की बात करता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है, राइट. बट व्हाट हैपेंड इन द ईयर 1990, सो देयर वाज अ पर्सन देवी लाल, उन्होंने क्या करा, डिप्यूटी पीएम का ओथ लिया. ठीक है, अब जब ओथ लिया, बट कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा कोई पोजीशन रखता ही नहीं है, सो देयरफॉर दिस वाज चैलेंज्ड. ठीक है, दिस वाज सेड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस वाज चैलेंज्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. बट व्हेन द मैटर वेंट इनटू सुप्रीम कोर्ट, the Supreme Court said that this oath is valid, because उन्होंने बोला कि here only you are, somebody is like describing a person as a deputy PM, and if just a person is being described as deputy PM, it is only descriptive in nature. So यहाँ पे उनको कोई powers of PM नहीं मिल रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने बोला दैट इफ़ एनी पर्सन, सॉरी नॉट पर्सन, बट इफ़ एनी मिनिस्टर इज डिस्क्राइब्ड एज डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर काइंड ऑफ मिनिस्टर अबाउट विच देर इज़ नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन देन यू विल नॉट से कि जो उन्होंने ओथ लिया है वो कहीं से भी वायलेटिव है. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी वायलेटिव, बिकॉज अगर उन्होंने उनके ओथ का जो सब्सटेंस है, ठीक है, ओथ का जो कंटेंट है, दैट वी हैव सीन अर्लियर ऑल्सो, इफ दैट इज करेक्ट देन जस्ट अ डिस्क्रिप्शन डजेंट मैटर, दैट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड. नाउ इन द कमिंग वीडियोज वी विल ऑल्सो हैव अ सेक्शन ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो आप कहिए कि कैटेगरीज हैं. ठीक है, तो एट टाइम्स क्या होता है, and there also you will read this, that at times the council of ministers may include a deputy PM or deputy CM. ठीक है, एंड दे आर अपॉइंट, जैसे CM के लिए तो स्पेशली PM तो आपने नहीं उतना सुना होगा, बट CM के केस में तो मल्टीपल स्टेट्स यू वुड हैव हर्ड अबाउट, इनफैक्ट एट टाइम्स मोर देन वन डिप्यूटी CM ऑल्सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट. तो दीज आर पोजिशंस जस्ट अपॉइंटेड फॉर लोकल रीजन्स, अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसा वो कर सकते हैं, बट एज सच कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कुछ खास नहीं कहता है, राइट. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर. Moving ahead, when we talk about relationship, now this we have done, so this is a kind of revision because we have done it at several places in a broken format. So here we'll do it at like one place. So relationship between president and PM and governor and CM. So what are the constitutional provisions which give you that relationship? I have already dealt it in detail about this, so I'll just give you the articles number so that it's helpful for you to understand it. First is article 74 and 163, then you have article 75 and 164, and then you have article 78 and 167. So if we try to recall what have we studied in this, here we talked about that there should be a council of minister which should be headed by PM or CM, and this council of minister should aid and advise the president, the governor. I hope you remember. So here you are seeing one kind of a relationship. The other kind of a relationship that has come from article 75 and 164 was about, उसमें हमने बहुत सारे provisions देखे थे other provisions करके. So one was about appointment, that the appointment of PM or CM will be done by the president or the governor, and then holding office
ड्यूरिंग देयर प्लेजर। एंड एक चीज़ जो हमने देखी थी वो और क्या था, जहाँ पे हमने बात करा था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इन मल्टीपल एस्पेक्ट्स हियर ऑल्सो यू फाइंड द रिलेशन। ये सब हमने करा हुआ है, सो दिस इज जस्ट अ रिविजन फॉर यू, एंड दीज वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो इटसेल्फ, वेर इन वी हैव टॉक्ड अबाउट ड्यूटी ऑफ PM CM टू फर्निश certain kinds of information. ये हमने करा हुआ है in the powers and functions. So to furnish certain information to president or governor. So ये आपको याद रखना है, ये जो पूरा रिलेशन है, these articles you have to remember and the counterparts also, wherein you discuss about the relationships, the constitutional provisions giving the relationships about between the PM and president and CM and governor. A very small segment that we'll also do is about those chief ministers who became prime ministers. So there are 6 people who were earlier serving as chief ministers of different states who then became prime minister. So ये नाम it would be better if you remember. So अगर हम बात करें मुरारजी देसाई, then you have चरण सिंह, you have VP Singh, you have PV Narasimha Rao, you have HD Deve Gowda, and you have the present Prime Minister Narendra Modi. ठीक है, they have been CMs of different states at different point of time and then they became PM. Like मुरारजी देसाई के केस में वो बॉम्बे में थे, चरण सिंह यूपी, VP सिंह यूपी, नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश, HD देवगौड़ा कर्नाटका, and Narendra Modi, Gujarat. I hope this shouldn't be a problem to you. And there is just one little section that I'll show you. I think these are important, like, you know, good enough to be remembered. इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. These are just the miscellaneous information as I've told you. But just one thing you will have to read, and you can read out your own. इसमें nothing is to be taught about. The role descriptions which the different political scientists and experts have talked about the role of PM in Britain. But because it also holds kind of equally good in the Indian context also, so you can just read that, you know, what people have said about these positions, like Lord Morley saying that PM is the primus inter pares, which means first among equals, and the other things. Then Herbert Marrison, that, you know, the same position. Then William Werner Harcourt कि he is a moon among lesser stars, etc etc. So ये आपके बुक में दिया हुआ है, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, this section, the role descriptions for the PM, so that in case in mains you have to write something, let's say, you know, तो आप एक दो इसमें से example ले सकते हो. So here we end our discussion on this particular topic. I hope you are enjoying the session. I'll see you guys in the next video. Thank you. Bye bye.